हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितिका और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बात जिसे शुरू में तो आप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अगर मैं कहूँ कि एक फिरंगी लड़की का फेवरेट खाना रोटी है तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। तो आज मैं आपको यही दिखाऊंगी कि कैसे रोटी 7 समुंदर पार भी फिरंगियों की थाली में अपनी जगह बनाकर बैठी है। एक्चुअली रोटी एक ऐसी डिश है जो ब्रिटिशर्स को, अमेरिकन को, यूरोपियंस को बहुत पसंद आती है। और ना केवल गेहूं के आटे से बनी सादी रोटी, बल्कि इंडियन ब्रेड की सारी वैरायटी जैसे कि नान, पराठा, रुमाली रोटी, मिस्सी रोटी, अक्की रोटी, मक्की रोटी, तंदूरी रोटी, बाजरा रोटी, कुट्टू की रोटी वगैरह वगैरह, ये सारे तरह की रोटी गोरों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या इतने सारी तरह की रोटी विदेश में मिलती है? तो आपको बता दो, जी बिल्कुल मिलती है। इंग्लैंड में, खास करके लंदन में, कम से कम हर एरिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट तो है जहाँ पर 3 तरह की रोटी बिल्कुल मिलती है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि ये फिरंगी लड़की कैसे रोटी को पसंद करती है और किस तरह रोटी बनाकर खाती है। Hello, my name is Sara. I'm from Italy. I'm from Rome. Me and my daughter, we really love roti, and today, with the help of my Indian friend, we are making. We really love roti. We try in Indian restaurant. We try in several places. दरअसल कुछ लोगों को शौक होता है अपने हाथों से खाना बनाने का, चाहे वो किसी भी तरह का खाना हो। ये सारा मैंचुरियन है, इटली से है और मेरी इनसे दोस्ती हुई दर्जदार। और क्या खूब दोस्ती हुई। बात ये है कि सारा का फेवरेट खाना अब पिज्जा या पास्ता नहीं है, रोटी और पालक पनीर है। हालांकि हर बार रेस्टोरेंट जाकर इसे खाना संभव नहीं हो पाता और हर बार दोस्तों के घर जाना भी संभव नहीं हो पाता, इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना रोटी बनाना सीख लिया जाए। और इन्होंने कोशिश भी की। इन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए खुद ही रोटी बनाया। तो आइए देखते हैं सारा अपने हाथों से रोटी कैसे बनाती है। So, as my Indian friend says, first of all, I need to take flour. It can be just the normal flour that we use. I'm taking flour. I have kept my kettle on. I suppose warm water makes soft rotis. Now the water goes in the flour. I think it needs a little bit of mop water. I have seen Ritika doing the dough, so I know how it should be. Now the dough is ready. Anna, devi capire. Ciao, io ricordi. I'm using my rolling pin and my stone, the same one that I'm using to make pizza. I'm taking flour and putting in a plate. I will roll it and make the size of the rolling. And now I will cut the whole dough in 3 centimeter pieces. Something like that. Like that. Correct. It looks like I'm doing a gnocchi in Italy. And what do you do that for? Gnocchi is a kind of pasta, but we are using potato inside for the dough. We use potato inside the dough for paratha, aloo paratha. Okay, I did. I'm making the ball perfect, round and smooth. Now, rolling and rolling on the dry flour. I'm not around. I'm not able to do like that. Let me try.
We flatten the dough ball and roll it into a flat round circle. Not too thin, not too thick. The pan has to be hot, as my friend said. The pan is really hot now. I can put... Come on, Ritika, I can cook sometime. The air bubble is forming up. Now I need to flip it over. Wow, look at this, Ritika. Look. Wow. Look how beautiful my roti is puffing up. I prefer to put olive oil instead of Indian butter, ghee. My roti is ready. It's really good. I'm an expert now. Let me do another one. Wow, this is round. Yeah. This is my roti. I'm so happy. Hey! तो आपने देखा सारा ने अपने और अपने परिवार के लिए रोटियां कैसे बनाई। विदेशी मूल के लोगों से अपने भारतीय खाने को इतना प्यार मिलते देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको सारा को रोटी बनाते देखकर कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आती रहूँगी। अपनी भारतीय संस्कृति पर अभिमान हो ऐसी कहानी आपको सुनाती रहूँगी। आप इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।